Good morning, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to the morning session. My name is Avinash, and I'll be your host for the today's session. Right? अगर हम मार्केट की बात करें, before we move ahead with the market updates and everything, uh, let me introduce to the panel we will have today with us for the morning session. We will have Nikun sir with us today for the morning session, and Nikun sir will, briefly discuss about the meeting that we had with Donald Trump yesterday, right? And काफी सारे उसमें discussions हुए and let's see how it gonna help the market, how it gonna help us. यहाँ से कुछ हमें रिवर्सल देखने मिलता है या बाउंस बैक देखने मिलता है हमारे निफ्टी में and all of the indices, right? So let's see how it goes because MIGA plus MAGA MAGA has decided to laterally invest like 500 billion by 2030, right? So it's a very good initiative by both of these countries. So let's see ये market में क्या हमें sentiments देगा, क्या तेजी लाएगा. uh, अगर ये दोनों देशों ने अगर डिफेंस के अराउंड कुछ फोकस किया तो डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर में भी कुछ तेजी आ सकती है, राइट? तो ऐसा काफी सारे छोटे छोटे चीजें हैं जो तेजी लाने के हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं मार्केट में, ये सारे मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो ये हम पे है, हम इसे कैसे यूटिलाइज और मैक्सिमाइज कर पाए, राइट? सो अगर मार्केट की बात हम करें, सो इतना कुछ फर्क नहीं दिखा हमें आज फिलहाल, बट वी आर स्टिल अवेटिंग कि अच्छा खासा एक बाउंस बैक देखने मिले, क्योंकि कल के अच्छा कैसे फॉल के बाद कल मार्केट के अच्छे कैसे इट नियरली फेल्ट बाय 1% कल निफ्टी. तो बट आज एक अच्छा खासा हमें पॉजिटिव ओपनिंग, फ्लैटिश टू पॉजिटिव अगर कहे, फ्लैटिश टू पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है निफ्टी में, राइट? एंड फॉलोड बाय बैंक निफ्टी भी it's flattish to positive, all of the indices. तो आई गेस मार्केट ने थोड़ा थोड़ा सा इस पे रिएक्ट करना शुरू किया ये न्यूज पे. सो हम देखते हैं आगे आज का पूरा दिन या आज का कमिंग वीक हाउ इट विल गोना बी फॉर अस, हाउ इट विल गोना बी फॉर द मार्केट, एंड हाउ द मार्केट विल गोना रिएक्ट. तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे. इसके अलावा कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन रहा, वी विल डेफिनेटली गोना शेयर द सेम विद यू गाइस, राइट? अगर हमने हमारे मोतिलाल ओसवाल के फंडामेंटल पिक्स की अगर हम बात करें, तो हमने हमारे रडार में एसआरएफ, जो हमने काफी काफी सेशन से हम लोग कह रहे हैं, 2 हफ्ते से इनफैक्ट कर रहे हैं, एसआरएफ को प्लीज अपने फोकस में रखिए. यू कैन डेफिनेटली इनिशिएट योर ट्रेड एक्टिविटीज इन योर एसआरएफ स्टॉक, बिकॉज अच्छा खासा देखने मिला था. बट आई गेस निकुंज सर इज ऑलरेडी हियर. Hi, Avinash. Am I audible? Yes, you are absolutely audible, Nikunj sir. Your screen is also visible now. Your camera is off. Okay. Now, is it visible? Yeah, everything is good. Okay. So, should we start? Yes, great. Over to you, sir. I was waiting for you. Sure. So, good morning, Avinash. Good morning, everyone, for joining in the final session, the final morning session for the week. And so, कल पॉजिटिव टॉक्स थोड़े से रहे इन द ग्लोबल अगर पिक्चर में वेयर आर पीएम हैज मेट द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा. बट मार्केट फिलहाल वो पॉजिटिव ओपन होके भी ऊपर से वापस थोड़ी सी सेलिंग आ रही है. तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा सेल ऑन बाउंस स्टैंस है इन दी मार्केट्स. तो निफ्टी की अगर बात करें तो 23,333 लास्ट टाइम व्हेन आई टुक द सेशन, तो बताया था कि 23,333 वाज द क्रूशियल सपोर्ट जोन. वो ब्रेक करेगा तो 23,000 एंड नीचे में 22,800 जो स्विंग लो था. इवन 2 days बैक इट मेड अ लो नियर 22,800 के आसपास, और एक पुल बैक रैली टुवर्ड्स 23,230 के आसपास आया है. तो आई थिंक नीचे में जब तक 22,800 एंड ऊपर में 23,333, तो ये 500 पॉइंट का एक रेंज है एज ऑफ नाउ, जहाँ पे ऊपर से सेलिंग आ रही है. कल भी मार्केट्स ने ट्राई टू गो हायर ऑलमोस्ट 130 तक इट वाज इन द पॉजिटिव टेरिटरी, बट लास्ट आवर में एक सेलिंग आया and there has been relentless selling by the FIs in the both cash market and derivatives market. So almost every day 2-3,000 crores worth of selling is net sell figure is there from the FIs, which is the main reason why index is not able to sustain at higher levels. And her
मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट पे सप्लाई आ रही है. बट मेन थिंग इज कि नीचे से थोड़ा सा सपोर्ट बेस बाइंग भी आ रहा है, तो 22,800 इज वेरी क्रूशियल फॉर निफ्टी टू होल्ड गोइंग आज और गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीक. एंड तो अगर 22,800 ब्रेक कर देगा तो देयर कुड बी सम मेजर पैनिक सेलिंग towards 22,500 and 22,000 also. But as of now, till the time it is holding 22,800, this 500-600 points range bound move could be there, जहाँ पे ऊपर में 23,350 के आसपास से थोड़ी सी सेलिंग आ जाएगी, बट नीचे में 23,000 इमीडिएट सपोर्ट 22,900 जो इंटरडे सपोर्ट्स है वहां से बाउंस बैक आ सकता है. तो एज ऑफ नाउ ये 500 पॉइंट का रेंज है, 22,800 इज वेरी क्रूशियल, बी माइंडफुल ऑफ दैट. एंड ऊपर में 23,333 अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है देन वी कैन सी दैट मूव एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 23,500 एंड 650 लाइकवाइज. तो एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी relatively has been doing well. Even you can see it has been relatively doing well, and नीचे में it has defended the 49,000 marks. तो नीचे में 49,000, ऊपर में 50,000. So that 1,000 point range bound move is may continue. जो कैंडलस्टिक बना था 12 फेब को, जहाँ से लो से काफी शार्प मूव आया था, तो फील दैट वो लो जल्दी से ब्रेक नहीं करना चाहिए. दैट इज 48,700 के आसपास. तो टिल द टाइम इट इज होल्डिंग 48,700 800 जोन, we can see some pullback towards 50,000 and 49,000 is the immediate support zone, while ऊपर में 49,750 850 and 50,000 are the immediate hurdle points. तो एक रेंज में ही है, बट मेन निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली परफॉर्मिंग वेल. हालांकि वो भी गिरा ही है, बट वो कम गिरा है. तो विच इज वाई एक 1,000 पॉइंट्स का एक रेंज है, नीचे में 49,000 इमीडिएट सपोर्ट, नेक्स्ट 48,750, ऊपर में 49,750 एंड 50,000 आर द रेजिस्टेंस पॉइंट. तो एक 1,000 पॉइंट्स की बैंड है, वेरिन नीचे से towards 49,000 के आसपास आता है, तो we could see some pullback towards 49,500 49,750, but 49,000 ब्रेक करेगा तो 300-400 पॉइंट का एक फॉल आ सकता है. तो ये थी इंडेक्स की बात है, मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस. एंड मार्केट्स में वोलेटिलिटी इज वेरी हाई. कल भी हमने देखा वेरिंग द इंडेक्स वाज अप, निफ्टी इंडेक्स वाज अप 150 पॉइंट्स, इट एंडेड फ्लैटिश एंड एट वन पॉइंट वाज इन नेगेटिव टेरिटरी. तो स्विंग्स काफी हाई है, तो बी माइंडफुल ऑफ योर स्टॉप लॉसेस एंड बी माइंडफुल ऑफ द पोजीशन साइजिंग एज वेल. तो आई थिंक ये थी इंडेक्स की बात. आई थिंक अगर इंटरडे स्टॉक वाइज देखे तो आई थिंक देयर इज वन स्टॉक that is on our radar and we have also shared on the terminal is Inox Wind. So एक intraday setup अच्छा बन रहा है in Inox Wind, wherein consolidation breakout in the 15-minute lower time frame intraday के लिए. तो I think we'll see the intraday charts only. So we can buy at CMP, that is 177 के आसपास, 177 178, keeping a support of 174 and 174 173, and look for target towards 185 on the higher side. So Inox Wind is one intraday trade that we have shared on the terminal as well, and we are focusing on that for the intraday, purely intraday. So be mindful of the stop loss. अगर stop quick होता है तो exit कर लीजिए. अगर 1-2% का quick move आ जाता है तो try to book profits in that. So we can buy Inox Wind at CMP at 177 178, keeping a support of 174 and look for 184 on the higher side. तो ये एक ट्रेड सेटअप समझ में आ रहा है. तो दैट वी हैव शेयर्ड इंडेक्स लेवल्स, वी हैव शेयर्ड. तो आज भी देखे तो निफ्टी 23,000 डिपेंड कर रहा है एज ऑफ नाउ, एंड बैंक निफ्टी 49,300 के आसपास एक अच्छा सा बेस बना रहा है. ऊपर से थोड़ी सी करेक्टिव मूव आया था, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरडे डिप से बाउंस बैक आया तो वापस 49,400 के आसपास चलता है. तो this is how it is. I think volatile swings बने रहेंगे, and we have to be mindful of that, how you position your trades, and be mindful of the position sizing as well. So index views, we have shared support resistance, major hurdles, major supports, and
निफ्टी में आई रिपीट अगेन 22,800 इज वेरी क्रूशियल. वो होल्ड कर लेगा और 23,360 के ऊपर क्लोज दे देगा, तो वी कुड सी सम what is it, cool off towards 23,650. एंड बैंक निफ्टी लाइकवाइज 49,000 इमीडिएट सपोर्ट वो होल्ड कर रहा है तब तक. 49,750 50,000 gradual moves can be seen. जो 2 दिन पहले 12 फरवरी का जो लो था, they are very crucial on both the index, so be mindful of that. And one trade, intraday trade we have shared on Inox win 174 के सपोर्ट से 184 के टारगेट के लिए we can see. So I think अगर कोई और ट्रेड सेटअप समझ में आएगा तो we'll definitely share. And I think in the meantime Avinash, we can take few queries. अगर किसी की कोई query रहेगी, कई पोजीशन अटकी है, तो we can help try to navigate during this volatile market. Sure, Nikon sir. So I'll just repeat the intraday trade once again. Yeah. So guys, we have shared an intraday trade on Inox Wind, right? Currently trading here 176 or 177 outside. So you have to buy it near the current market price with a stop loss of 174, right? Yeah. And target for the upside will be 185. Perfect. Great. So guys, we have pinned it as well. Please make sure when you initiate the trade, you put a strict stop loss of 174, right? Because market में volatility हो सकती है, considering कि news आया है, right? About the meeting with our Prime Minister, Donald Trump. So maybe कुछ उसमें volatility हो सकती है market में, but still do make sure कि you put a strict stop loss of 174. So meanwhile, we'll take stock queries, Nikun sir. Sure. So yesterday we have given a VTST on DCW. Okay. Would you update on it? Just a minute. I think DCW कल I think कल we had given, but I think उसका स्टॉप कल ही ट्रिगर हो गया था. तो I think अगर आपने स्टॉप नहीं ट्रिगर किया और एग्जिट नहीं किया तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 78. 78 ट्रेड करेगा तो यू शुड एग्जिट योर पोजीशन. Great. So what is your view on PFC? So PFC थोड़ा सा रेंज बाउंड है, लेकिन बायस नेगेटिव है, लोअर लोज फॉर्म हो रहा है, तो आई थिंक एक पुल बैक मूव है. तो जब तक नीचे में 370 होल्ड कर रहा है, आई थिंक द पुल बैक मूव टुवर्ड्स 390 392 कैन बी एक्सपेक्टेड. तो आई थिंक कल का लो इज वेरी क्रूशियल. अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 376 एंड होल्ड. एज सच कोई सेटअप नहीं है इन पीएफसी, बट थोड़ा सा बाउंस बैक है. The trend is still negative till it is not crossing above 400. ये sell on rise in PFC could continue. अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 376 एंड होल्ड. अगर 376 ब्रेक करता है तो यू शुड एग्जिट योर ट्रेडिंग पोजीशन. Okay. Motilal Finance. Okay. I think Muthoot Finance has yesterday results announce किया था और अच्छा अप मूव आया था almost 6% का, और आज almost we have seen correction from higher levels. तो यही है, आई थिंक मार्केट में कोई स्टॉक एक दिन परफॉर्म करता है तो दूसरे दिन फॉलो अप नहीं आ रहा है. तो कल ब्रेकआउट दिया था एंड इट फेल्ट दैट इट शुड कंटिन्यू ऑन द हायर साइड. जो वॉल्यूम्स था ऑलमोस्ट 10-20 टाइम्स द एवरेज डेली वॉल्यूम्स. तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज वापस 2% नीचे है, 3% नीचे है. So till the time it is holding 2200, I think we can see आज थोड़ा सा corrective move है, थोड़ा सा cool off होगा, and it can again see a bounce back towards 2300, 2320 also. So till the time it is holding 2200, बने रहिए long side. breakout है और थोड़ा सा profit taking है from higher levels, but we can see 2300, 2320 on the higher side. So, Nikun sir, we had shared a BTST on Ashok Leyland, I guess day before yesterday. Okay. So could you please update on that as well? Okay. Ashok Leyland, I think it worked very well. I remember 4-5% का मूव आया था और कल ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, बट जो कैंडलस्टिक बना है ऑन द 12th Feb is very strong. So and it has traded also the 50-day exponential moving average, which is 214. So I think थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, बट आई थिंक जब तक 210
नीचे में नहीं ब्रेक करता है, आई थिंक वी कैन सी फिर से वापस एक बाउंस बैक एंड पुल बैक मूव टुवर्ड्स 222 294 आल्सो। तो 210 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए, ऊपर में 222 225 के टारगेट। कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स है, कल्याण ज्वेलर्स एक रेंज में है बट नीचे में 500 होल्ड कर रहा है, तो जब तक 500 498 इज द स्विंग लो, तो 495 रख करते हैं, तो 495 इज द इमीडिएट सपोर्ट एंड 3 दिन से कंसोलिडेशन मूव है, अगर 530 के ऊपर निकलता है तो वी कैन सी सम फॉलो अप टुवर्ड्स 550, बट जो मेजर ट्रेंड है वो थोड़ा सा बेरिश है बिकॉज इतना बड़ा सेलिंग आया है, ऑलमोस्ट 800 से स्टॉक मेड अ लो टुवर्ड्स 430, तो ये पुल बैक मूव ही है। तो अगर आपकी पोजीशन है और ट्रेडिंग पोजीशन है, कीप बी माइंडफुल ऑफ योर स्टॉप लॉसेस ऑन द लोअर साइड, दैट इज 495, अगर 495 ब्रेक करता है तो आई थिंक यू शुड एग्जिट योर ट्रेडिंग पोजीशन। हिंडाल्को, So before that, I think one more stock which is looking very good and थोड़ा सा beaten down है और नीचे से अच्छी buying आ रही है is SBI cards. So I'll quickly share the levels for that. So SBI कार्ड इंट्राडे के लिए भी अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक द करंट मार्केट प्राइस इज 868,869, कीप अ सपोर्ट ऑफ 855 एंड लुक फॉर टारगेट ऑफ 888 ऑन द हायर साइड। सो वन मोर इंट्राडे ट्रेड जो समझ में आ रहा है इज एसबीआई कार्ड, द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ, बट ऐसे तो द स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है फ्रॉम द हायर लेवल्स, बट एज ऑफ नाउ इट इज शोइंग सम वेरी गुड मोमेंटम एंड कल की लेवल से आज फिर फॉलो बाइंग आई है, तो जो इंटरडे ट्रेड है वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो 868 इज द करंट मार्केट प्राइस, कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 858, लुक फॉर 888 ऑन द हायर साइड। सो एक इन आइनॉक्स विंड है और एक एसबीआई कार्ड, दीज आर द टू स्टॉक्स दैट यू शुड फोकस प्योरली इन इंटरडे प्ले। तो be mindful of the supports that we have given and also the targets. So if you get 1.5%, 2% move, then you should book your profits. अगर नीचे में stop it होता है तो you should definitely exit the position and don't try to average it or try to bottom fish or losing position. Yes, so कौन सा stock था आपने बोला? So guys, we have initiated another intraday trade on SBI card. I'll repeat once again. Currently trading near 865, 868, 869, I guess. Yes. So we have to buy it near the current market price. The stop loss will be 855. 855 का stop loss लगाना है और target for the upside will be 888. 885 के आसपास या 88 के आसपास आपको इसका टारगेट मिल सकता है, right? So we have pinned it as well. We'll move ahead with the next stock query. That was on Kalyan Jewellers. Did we took the Kalyan Jewellers? Kalyan भी took क्या? Kalyan भी took. Hindalco. हिंडाल्को एक रेंज में है बट काफी कंसोलिडेटिव मूव है, तो नीचे में 585 इज द सपोर्ट, ऊपर में 610 का सप्लाई जोन है, तो अगर 610 के ऊपर क्लोज आ जाता है तो वी कुड सी सम फर्दर अप टुवर्ड 630, तो एक रेंज बाउंड काउंटर है बट 585 589 इज द सपोर्ट फॉर हिंडाल्को, ऊपर में 610 अगर क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाता है तो 630 के मूव 630 के आसपास एक फॉलो अप मूव आ सकता है हिंडाल्को। So निकुंज सर, जैसे कि हमने अच्छा खासा बात किया न्यूज के बारे में, राइट? आवर प्राइम मिनिस्टर मेट द यूएस प्राइम मिनिस्टर, राइट? काफी सारी चीजों पे बात हुआ एंड इवन आई वाज रीडिंग सम आर्टिकल्स, राइट, where it stated that these countries will work on their defense sides as well, right? तो ये सब के होने के बाद आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स में हमें तेजी मिलने की अपॉर्चुनिटी है, राइट? आई थिंक तेजी से ज्यादा the meeting is more to see how the tariffs will play out. तो अगर इंडिया पे टैरिफ कितना लगाता है, that was the fear
I think after they impose some tariff on China, the streets feared that India maybe major tariffs आएगा. But as of now, there is no major tariff news. So it's like no bad news is good news. So this is how the market is reading the meeting. ऐसा कोई गम हो, there is no some deal signing or something like that. But the meeting has given a positive breakthrough in that, and no bad news is good news in market. तो कोई tariff का major news नहीं है. So that is the positive that they are taking, and we can see that green on the screen as well. As of now, it is holding relatively well. So and we are at the bottom levels. तो एक कोई भी positive trigger आता है तो we could see some major short covering above 23,333. तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक एक range bound move will continue. So news will come and go. We don't have to play on the news. What the price is saying is more important, and price as of now is not that great, but no bad news is good news. That is what we can conclude on that. Great. I guess BTS Sure Ashram Leyland was shared by Mayurji already. Mayurji, I hope you are trading on Rise app from Motilal Oswal, right? So we'll move ahead with the next stock query. That was on Manapur. Manappuram कल result announce किया था and it's down by almost 5.5%. I think though stocks in the similar segment, Muthoot Finance posted very good results. Manappuram not so good. So a corrective move could continue towards 170 to 173. I think if you want to buy near 170 to 170. So that would be a good entry point in Manappuram. अगर आपका already long है, so keep a support of 180 and hold. 180 break करेगा तो 172 आ सकता है. तो अगर 180 ब्रेक किया, अगर आपका पोजीशन ऑलरेडी है तो कीप अ सपोर्ट ऑफ 180 एंड होल्ड. 180 ब्रेक किया तो एग्जिट, अगर नहीं है तो ट्राई टू बाय नियर 170 172 zones. That would be a good risk reward entry point. Great. What is the view on UBL? So likewise, UBL also had some this quarterly 3 results announced yesterday. एक sharp uptick आया है, ऊपर से वापस थोड़ा सा करेक्टिव हुआ है. तो एक कंसोलिडेशन में ही है. एक ऊपर से करेक्टिव 2300 से the stock has corrected almost 300 points towards 2000 and वहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा है नियर 2000 2100. तो as such कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, बट जब तक 2000 के ऊपर है we could see this pullback towards 2150 and 2200, but slow moving counter है. तो अगर बाय 2000 ब्रेक कर दिया तो आपका लॉन्ग है तो यू शुड एग्जिट लॉन्ग्स फ्रॉम UBL. अगर जब तक 2000 होल्ड कर रहा है we could see some pullback or up move towards 2150 2200 on the higher side. Great. So what is your view on Zomato? क्योंकि हमने परसों देखा था Zomato में 3-3.5% का एक डाउनसाइड देखा था, राइट? और फिर कल Zomato में थोड़ी अच्छी खासी रिकवरी हुई है, बट आज फिर से Zomato it's nearly 1% डाउनसाइड. Yes. So I think Zomato after a correction एक consolidation मोड में है. तो 230 ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में 210 and 205 are the immediate support. तो ये रेंज ही प्ले करना पड़ेगा as of now, because ऊपर से 300 से स्टॉक has corrected to almost 200 rupees वहां से. तो this consolidation move you have to play. When it comes near 200 205 208, you can buy and look for a move towards 212 218 और लेवल्स. ऊपर में 230 में थोड़ा सा सप्लाई जोन है, तो जब तक 230 ऊपर में नहीं निकलता है, this consolidation of 15-20 points will continue. So be mindful. अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो keep a support of 208 and hold and look for 220 222 on the higher side. अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो this should definitely be in your portfolio. So we'll guys take 2 more stock queries for today. What is your view on Go Digit? Gold digit, I think आज वॉल्यूम्स भी काफी है. यूजुअली
जो वॉल्यूम्स रहते हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम आज है. आई थिंक कोई अनाउंसमेंट या कुछ रिजल्ट आया होगा. आई एम नॉट टू श्योर ऑन दैट, बट एक कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट 2 वीक का कंसोलिडेशन है एंड इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट अबव 310. तो अगर आज 310 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो वी कुड सी द मूव एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 320 एंड 325 ऑन द हायर साइड. एंड नीचे में 300 का सपोर्ट है. अगर 300 जब तक होल्ड कर रहा है एंड आज की क्लोजिंग 310 के ऊपर आ जाती है तो we could see this move extending towards 322 and 325 on the higher side. तो 300 सपोर्ट से बने रही है. So what is your view on TVS Motors for intraday? For intraday, just a moment. Right, TVS Motors. So as of now, कल के लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है. तो I'll just quickly see the hourly time frame. तो कल का जो लो स्विंग लो है 12 तारीख का विच इज 2420. तो 2420 के आसपास आता है तो आई थिंक अगर वो ब्रेक करता है तो फर्दर करेक्शन आ सकता है. तो इंटरडे के लिए अगर किसी को बाई करना है या प्ले करना है तो कोई सेटअप तो नहीं है. बट जब तक 2420 ये होल्ड कर रहा है तब तक वी कुड सी थोड़ा सा ग्रेजुअल मूव टुवर्ड्स 1% का कुछ मूव आ सकता है. बट एज ऑफ नाउ सेटअप तो कुछ नहीं है. बट अगर पोजीशन लेनी है तो बी माइंडफुल ऑफ द स्टॉप लॉस ऑफ 2420. अगर वो ब्रेक कर देगा तो वी कुड सी फर्दर करेक्टिव मूव टुवर्ड्स 2355 2360 इज प्लान. Guys, please don't spam your here. We will definitely go to take a stop query since हम लोग एक order में जा रहे हैं, right? So we'll definitely take your query. So this will be the last query, guys. What is your view on Ola Electric? I think Ola, I'll just share the daily time frame chart. I think it looks like it will correct further. I think don't try to bottom fish Ola Electric. अगर आपका position है तो keep a stop of 60 and hold. But I think the stock can correct further towards 55 also. So don't try to catch the falling knife as they say in technical terms. So the stock is making lower high, lower lows, and it has given a fresh breakdown below 65. I think it can correct further. So don't try to bottom fish Ola Electric. So yes, that's it, guys, from our end. Yes, Mayur ji, we are working on it. Rightly said, हम लोग थोड़ा फॉर्मेट चेंज करने वाले हैं. जैसे कि मैंने इसके पहले भी एक बार मेंशन किया था, we will going to come up with something like stock sessions where we will definitely dedicatedly talk around the stock, right? इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे या उसमें कुछ अगर एक डिलीवरी कुछ बनता है, we will definitely share it and we'll track it for a couple of days and we'll come back for the next week. This is something the plan we have and we'll share accordingly to you guys as well. So yes, that's it, guys, from our end. Thank you so much, Nikun sir, for sharing the insights. Thank you guys for joining. Don't forget to join the 11:30 session with our expert Ruchit sir. Stock the talk. Sure. Thank you. Thank you, everyone. Have a good day.